Hi students, in this video I am going to explain reasoning based question and answer in organic chemistry topic wise for the students of class 12th chemistry. It will be very helpful for you all for your forthcoming board examinations. So the question of the reasoning will be based on melting point, boiling point, nucleophilic substitution reaction and electrophilic substitution reaction, reactivity, solubility and dipole moment, etc. Suppose if any question is asked on the basis of melting point of organic compound, okay, then your answer should contain out of the following keywords. Okay, either the answer can be due to the lattice structure of the compound or due to the shape of compound, or say the question is asked why the melting point of this compound X is more as compared to Y. So you can say due to the dipole interaction between the molecules, or sometimes the answer is due to the surface area of the molecule, because the branch chain isomers have lesser surface area, so their melting point is low as compared to the straight chain compounds. So sometimes the answer is van der Waals forces of attraction between them, and sometimes it happens because of hydrogen bonding between the molecules. So I will take now the examples of the questions. So one by one you will get to know what keywords we have to use for the kind of questions. Question number 1, boiling point of bromoethane is higher than that of chloroethane. Now you see the size of bromine is large as compared to chlorine. Okay, so due to the larger size of the bromine as compared to chlorine, the molecule of bromoethane should have greater surface area. So here the van der Waals force of attraction should be more. That is why the boiling point of bromoethane is higher than chloroethane. Question number 2. N-Butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide. Why? As I was discussing above, N-Butyl bromide, it is a straight chain alkyl halide, and this is the tertiary butyl bromide, or say 2-methyl 2-bromopropane is the IUPAC name. Here, due to the branching, surface area becomes less, so van der Waals force of attraction is less in case of tertiary butyl bromide, so its boiling point is low, and reverse is the case in tertiary butyl bromide. Question number 3, alkyl halides thou polar are miscible with water. अल्काइल हैलाइड्स पोलर होने के बावजूद भी पानी में इमिसिबल होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं. सिंपल आंसर इज बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, or you can say the hydrogen bond is very weak. Okay, alkyl halides form very weak hydrogen bond with water. But the same question, if you want to answer in more detail, then you can write that alkyl halides are polar molecule. They are held together by dipole attraction, and the molecule of waters have strong hydrogen bonding. Now force of attraction between the alkyl halide molecules and water molecules, RX and water, इनके बीच में जो attractive force है वो weak है as compared to the force of attraction between alkyl halides and the water molecule, alkyl halide molecules and water molecule. Hence the alkyl halides are immiscible with water. जब नए बॉन्ड RX और पानी के बीच में अगर स्ट्रांग होते, उनके पुराने बॉन्ड्स जो पानी के बीच में थे और RX के बीच में थे, उन मॉलिक्यूल से अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता RX और वाटर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तब वो सॉल्युबल होता. ऐसा नहीं होता है और इसी वजह से RX पानी में इमिसिबल होता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर हेलो अल्केन्स वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. सेम क्वेश्चन है, because they cannot form, the hydrogen bond with water is very weak.
क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने बताया था आपको ब्रोमाइड में ब्रोमीन का साइज बड़ा होने से इसमें वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इथाइल ब्रोमाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हेलो अल्केन्स ईजिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाई। देखिए हेलो अल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, जिनकी पोलैरिटी काफ़ी कम होती है उनमें ये ईजिली डिजॉल्व कर जाते हैं, जैसे कि बेंजीन है, डाईथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो रीज़न क्या है? एक आंसर लिख सकते हैं आप, बिकॉज द आर एक्स मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिजॉल्व लाइक। अब देखिए हेलो अल्केन्स भी जो है लो पोलैरिटी के हैं और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी लो पोलैरिटी के हैं, दोनों पोलर पोलर जो है होने की वजह से उनमें डिसोल्यूशन हो जाती है। बट इफ़ यू वांट टू राइट in more scientific or more detailed answer, then you can say because the new force of attraction set up between Rx and solvent molecules are same, some nahi same as the force of attraction between Rx molecules and between solvent molecules, तो इस वजह से जो है ये soluble होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, para-dichlorobenzene has more melting point as compared to ortho and meta isomer। तो ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी वेरी सिमेट्रिकल। अब मेल्टिंग पॉइंट का एक कीवर्ड था द कंपाउंड विच फिट बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है ऑर्थो और पैरा आइसोमर से भी ज़्यादा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाते हैं। ड्यू टू द सिमेट्री इट फिट बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, सो द बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्वेश्चन नंबर 8, वाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स देखिए दिस इज द हेलो अल्केन, तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसको तोड़ना इजी होता है एंड द न्यूक्लियोफाइल अटैक इज वेरी इजी ऑन द कार्बन ऑफ अल्काइल। But if you see in haloarenes, here what happens? This is your benzene and this is the halogen, and you know that haloarenes do resonance. So due to the resonance, double bond character comes between carbon and halogen. So it becomes difficult to break this bond. So attack of nucleophile on the carbon of benzene become difficult. Another point you can write that in Rx, the carbon atom has sp3 hybridization, okay, but in case of haloarenes, the carbon to which halogen is attached, that carbon is sp2 hybridized, so here s character is more, okay, but in case of sp3 hybridization s character is less. So if s character is more, then electronegativity of carbon is more, so it withdraws the carbon halogen electron pair strongly, so bond length decreases, so bond becomes strong and it becomes difficult to break, and again we say the attack of nucleophiles become difficult. That is why aryl halides are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. Explain why propanol has higher boiling point than that of hydrocarbon butane। सीधी सी बात है, जो ब्यूटेन है वो नॉन पोलर होते हैं और उनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि प्रोपेनोल अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स प्रोपेनॉल्स का ज़्यादा होता है। अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी ईजीली this hydrogen bond, alcohols form hydrogen bond with water which is difficult to break, that is why alcohols are soluble। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इस वजह से ये पानी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। Which of the following will have higher boiling point and why? CH3NH2
अनदर इज CH3OH। अब आप देखेंगे हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अब देखिए आप, यहाँ पे नाइट्रोजन है एमाइन में और मिथेनॉल में ऑक्सीजन है, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ओके, so due to the greater electronegativity, that atomic size also decreases for the oxygen atom as compared to nitrogen. So the intermolecular forces of attraction in methanol is stronger, that is why their boiling point is high. Next is alcohols are more soluble in water than hydrocarbons. This we have already discussed. Next is why primary alcohols are more acidic than secondary alcohols. If you have a closer look on the structure of the primary alcohol, you will find it contains only one alkyl group, but secondary alcohol contains two alkyl group. Now alkyl groups show positive I effect. So due to the greater number of alkyl group in secondary alcohol, the electron density on the oxygen atom will be more as compared to the primary alcohol. So the shared pair of electron of O and H bond, okay, shared pair of electron of OH bond will be more displaced toward oxygen atom in primary alcohol than in case of secondary alcohol. Okay, so in simple language you can also show that due to the greater alkyl group, the plus I effect is more, so electron density on the oxygen atom of OH is more, so it is difficult to break the bond between O and H, so it is difficult to release the proton, so secondary alcohol becomes less acidic. But this is not the case in primary alcohol. That's it. Question number 14. Why alcohols have higher boiling point than hydrocarbons? This is repeated. And this is question number 15. Question number 15.1. Benzoic acid does not give Friedel-Crafts reaction. Benzoic acid Friedel-Crafts reaction नहीं देता है. You see what is Friedel-Crafts reaction and what is why it benzoic acid do not give it. You know that carboxylic acid is an electron withdrawing group, so it deactivates the benzene ring toward the electrophilic attack, so the benzoic acid does not give Friedel-Crafts reaction. एक्चुअली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये जो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है CH3+. ओके, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करना है, तो इसको कैसा सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए. ओके, लेकिन ये बेंजोइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे नहीं हो पाता. दैट इज व्हाई बेंजोइक एसिड डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर बी. कार्बोक्सिलिक एसिड विद मोर देन 5 कार्बन एटम्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. हमने ये बात पढ़ी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब कार्बन चेन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जब 5 से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं, तो ये पानी में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट एल्काइल ग्रुप इज़ नॉन पोलर एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग. सो when the number of carbon atom increases or becomes greater than 5, then the this non-polar effect it increases. That is why carboxylic acid is not able to form hydrogen bond with water, so it becomes insoluble. Next question. Acetic acid in vapor state shows the molecular mass of 120. So we know that this is the formula of acetic acid, and the molecular mass of acetic acid, if you count, it becomes 120 unit mass, 60 unit mass. Okay, so now we know that this acetic acid undergoes dimerization due to intermolecular hydrogen bonding as shown here. Okay, so in the vapor state it exists as a dimer, that is why its molecular mass becomes double.
Question number 16. How would you account for the following? Aldehydes are more reactive than ketones toward nucleophiles. Aldehydes, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति. ओके, you see here, this is the structure of aldehyde in which there is only one alkyl group, and this is the structure of ketone in which two alkyl groups are there. Now the two alkyl groups are the bulkier groups, so it do steric hindrance, so attack of nucleophile becomes difficult in case of ketones. But in case of aldehydes, there is only one alkyl group, so nucleophile can easily attack on the carbon atom of carbonyl carbon. And another reason you can write like this, that in case of ketones, the two alkyl groups are there with plus I effect, electron releasing effect. You got it? That is why the electrophilicity of the carbonyl carbon decreases. मतलब कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई बढ़ रही है, दो अल्काइल ग्रुप हैं. And when the plus charge decreases, then attack of nucleophile becomes difficult in case of ketones. But in aldehyde, there is only one plus I group. So the electrophilicity of the carbonyl carbon here is more. So here nucleophilic attack is easy. That is why aldehydes are more reactive than ketone toward nucleophilic addition reaction. Next is boiling point of aldehyde and ketone is lower than that of the carboxylic acids. It is very simple. Carboxylic acids have strong intermolecular hydrogen bonding, and it also do dimer formation. That is why their boiling point is higher, even higher than that of alcohols. But in aldehyde and ketones, there is simply dipole-dipole interaction, so their boiling point is low. Now the next question is, aldehyde and ketone undergoes number of addition reactions that I have already told. Addition reaction means here nucleophilic addition reaction. So you can say that aldehyde and ketone do lot of nucleophilic addition reactions in which nucleophiles Cn negative attacks from hydrogen cyanide, and Grignard reagent RMGX, it also attacks. Why it attacks? Because nucleophile requires electrophilic carbon atom. You see, this is the mechanism of nucleophilic addition reaction. So nucleophile, this due to the polarity, higher electronegativity of the oxygen atom of carbonyl group, oxygen achieves negative charge and carbon carries positive charge. So electrophilic center is generated on the carbon atom. On this, nucleophile or electron rich species can attack, and it forms a tetrahedral structure. Okay, and later in the second step, proton attacks and it forms a compound, okay, OH. So this is what happened in the nucleophilic addition reaction. So aldehyde and ketones can do nucleophilic addition reaction because of the polarity of carbonyl carbon. You can simply write like this. So this is the mechanism given here. First step is always slow and second step is fast. Okay, here this arrow actually should come here. Okay, and proton, and this step is fast. Slow step is the rate determining step, and fast step is the second one. So this is the addition product form. So you can simply write, because of polarity of carbonyl carbon, aldehyde and ketones undergo nucleophilic addition reaction. और अगर पूछें कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपने कहना है एल्डिहाइड. रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. So next is electrophilic substitution in benzoic acid takes place at meta position. अगर benzoic acid हो तो इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पर अटैक करता है,
because if you have a closer look on the resonating structure, it is very much clear that at ortho and at para position electron deficient centers are there, plus charge is there, and electrophile requires electron rich center, so it is not in a position, it will not attack at ortho and para position. The only position which is electron rich is left is the meta position, and meta position is comparatively electron rich because of the presence of pi electrons. ओके ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होता है. Next question is carboxylic acids have higher boiling point than alcohols. So you see in carboxylic acids stronger intermolecular hydrogen bonding is there, beside there is dimer formation, but in case of alcohols dimer formation do not occur, so their boiling point is low as compared to carboxylic acids. Question number 18. NH2 group is ortho and para directing. Nitration of aniline along with ortho para derivatives, a good proportion of meta derivative is also formed. तो देखिए NH2 ग्रुप है वो जब प्रोडक्ट बनाता है उस तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन जब एनिलीन की नाइट्रेशन हम करते हैं तो ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा भी बन जाता है, ऐसा क्यों, ये सवाल है. So here it is very much clear in the reaction when aniline is treated with the concentrated nitric acid and sulfuric acid, then para product, meta product, ortho product, all three are formed. How come this meta product is formed? Okay, now for this the justification is that during the nitration this acid releases the proton, so which the proton is electron deficient, NH2 group is electron rich, so when it attack on NH2 group it forms anilinium ion, and this anilinium ion is meta directing in nature. That is why during the nitration of aniline meta product is also formed. Question number 19. Give plausible explanation for each of the following. The presence of base is needed in ammonolysis of alkyl halide. तो ये क्यों हमें चाहिए होता है बेस. देखिए दिस इज द अल्काइल हैलाइड एंड वी आर ट्रीटिंग इट विद अमोनिया, इट फॉर्म्स प्राइमरी अमाइन, HX इज रिलीज्ड. ओके, अमोनिया से H और RX का हैलोजन निकल गया HX, यू वी गेट प्राइमरी अमाइन. Now on this primary amine again RX attacks, it forms secondary amine, HX is released. On secondary amine again RX attacks, then it forms tertiary amine, hydrogen halide is released. Then on tertiary amine alkyl halide attacks and it forms quaternary ammonium salt. Why we are using the word quaternary? Because 4 alkyl groups are there. Ammonium salt, because N contains plus charge, halogen contain negative charge, so we are using the word salt. Now from this quaternary ammonium salt, okay, quaternary ammonium salt, if you want to like extract the product, instead of that I will explain like this. This is the primary amine and this is the hydrogen halide. When it will react, it forms RNH3 plus X negative. Okay, so this is the substituted ammonium salt. Now this substituted ammonium salt, to this we add base. Why we add this base? In order to get the primary amine. ठीक है, when we add strong base, strong alkali solution, then we get primary amine plus salt plus water. Okay, so I hope we got the answer why base is needed in ammonolysis of alkyl halide in order to get the product amine. So why I was explaining all this, because this is the ammonolysis of alkyl halide. Okay, so in order to like explain the answer, I have used the product of first step. Okay, in the first step amine and hydrogen halide is formed, and that amine and hydrogen halide when it reacts together, then it forms RNH3 plus X negative.
अब इससे अगर प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालना होगा सो दैट यू गेट प्राइमरी एमाइन. ओके, so you can use any of the reaction. This ammonolysis process actually keeps on going on till quaternary ammonium salt is formed. Okay, तो आपको देखना है कि आपको किस स्टेज पे बेस डालना है, दैट्स इट. ओके, और बेस क्यों डालते हैं? ताकि हमें एमाइन मिल सके. नेक्स्ट इज एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड. जब भी हम लोग गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी एमाइन मिलता है, लेकिन एरोमेटिक एमाइन हम इससे प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको एरोमेटिक एमाइन प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पे RX की जगह आपको बेंजीन X यूज़ करना पड़ेगा, हेलो एरीन यूज़ करना पड़ेगा. अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ कॉल्ड थैलिमाइड एनाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ से थैलिमाइड एनाइन का पोटाशियम और RX का हैलोजन ये KX बन करके रिलीज़ हो जाते हैं और इस नाइट्रोजन पे R का अटैक हो जाता है. ओके, और ये बनाता है N अल्काइल थैलिमाइड, जैसा कि शो किया गया है. अगर आप यहाँ पे RX यूज़ करते, RX की जगह एराइल हैलाइड यूज़ करते, तो एराइल हैलाइड का अटैक जो है थैलिमाइड एनाइन पे नहीं हो पाता है, बिकॉज दिस एराइल हैलाइड undergoes resonance. So due to the resonance here double bond character comes, so which is difficult to break. You getting it? So it is difficult to break, so the this benzene cannot attack on the thalidomide anion to form the aromatic amine. So it's a simple case. Okay, so with this I am shifting to question number 19, which is the last question of this video. Para-methoxyaniline is a stronger base than aniline, while para-nitroaniline is a weaker base than aniline. Why? So you understand or remember this thumb rule: whenever there is electron withdrawing group like nitro group, electron density on the amine group NH2 group will decrease, so the basic character will decrease. And when basic strength decreases, then pKb value increases. Okay, because basic strength is inversely proportional to 1 upon, like is inversely proportional to the pKb value. और जब भी आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप या कोई प्लस आई ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एमाइन ग्रुप पे बढ़ा देता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका कंपाउंड नंबर 2. ओके, पैरामिथॉक्सी एनिलीन, और इनमें सबसे कम बेसिक होगा तीसरा वाला कंपाउंड, और बीच में होगा एनिलीन, जो कि ना ही ज़्यादा बेसिक होगा ना ही कम बेसिक, बिकॉज इट हैज़ नाइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप nor electron withdrawing group. Okay, so it is written that methoxy group is electron donating group, and para-methoxyaniline methoxy group will increase the availability of lone pair of electron on the nitrogen atom, thus make it more basic. Okay, and in case of nitro group, it is an electron withdrawing group, so it decreases the availability of lone pair of electron on the nitrogen, so it becomes less basic. So with this video I am closing the part 1 of organic reasoning question. See you in next video. Till then, stay connected, stay fit, stay fine, best of studies. Thank you.